नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी में चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, शेयर वीडियो एज मच एज पॉसिबल। अच्छा, मैं सबसे पहले एक बात करता हूँ, चैनल को आप सब्सक्राइब से कर लें जिन्होंने ना किया हो, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। लेकिन जो ये वसंत वानकुड़े के बड़े मैसेज आ रहे हैं, 25/1/24 का तो ये मैसेज था एक, तो इसके बारे में चर्चा हो गई थी, तो इसको तो खैर क्या देखें। लेकिन ये है, बता दूं, ये इन्होंने जो इनमें लिखे ना कि कोर्ट केस और स्टे के लिए स्टे लेने की जो बात है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, कोल्हापुर से, तो वो संभव नहीं है। और आज कहीं उन्होंने, वेंकटचलम ने भी ये कहा है कि भाई ये कोई ऐसा स्टे नहीं है और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कुछ मुद्दे हैं हमारे, वो साइन हो जाएंगे, वो मतलब सहमति बन जाएगी, डीएफएस हमें कन्वे कर देगा तो हम बहुत जल्दी साइन कर देंगे। तो वो क्रिमिनल केस से कुछ नहीं होता। और वैसे भी वो बॉम्बे हाई कोर्ट में चला, उन्होंने उसके खिलाफ वो कर दी है अपील, तो वो बॉम्बे हाई कोर्ट में, क्योंकि वो जुरिस्डिक्शन भी नहीं है उनका ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। तो ये भी मुद्दा था। अब इसके अलावा एक जो कुछ लोगों ने मुझे कुछ चीज़ें भेजी हैं, ये मैसेज बार बार इसका वसंत वानकुड़े का घूमता रहता है। अच्छा, कुछ लोगों ने लिखा है, देखो मैं वो आपको प्रतिक्रियाएं सुना देता हूँ कुछ लोगों की। एक वेणुगोपाल जी की चिट्ठी भी बड़ी लंबी है, तो उसमें टाइम काफ़ी लगेगा, वो तो मैं बाद में देखूंगा। अच्छा, ये है मिस्टर PN बेंस हैं ये, और हमारे डी पराशर हैं, इनका कुछ आपस में ये कहीं इन्होंने मुझे शेयर करें, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल मैसेज हैं उनके, पढ़ देता हूँ मैं आपको फटाफट। IBA is more than 50 years old and also not registered. True. But we are finding lacuna now. We all were silent spectators for the updation of pension and to take steps to demolish IBA. All trade union leaders may not be honest like most of our political leaders, but at least fighting for the bank employees according to their power strike call. Here we must remember that United Kingdom has no constitution, but the country is running smoothly on कस्टम ओनली। ये यूनाइट्स गलत लिख दिया इन्होंने, यूनाइटेड किंगडम लिखना था। UFBU इज द amalgamation of trade unions of different political learnings and always go on findings fault always is not in good taste. Now the family pension SBI pension from 40 to 50% and 100% DA neutralization has been settled to some extent. Similarly, the updation of pension will also be settled by the judiciary. As such, I appeal to all of our devoted activists to accept ex gratia for the time being and go on fighting at every possible platform. This is my personal views and not reflecting anyone's work. अच्छा, इन्होंने लिखा है, बेंस ने लिखा, PN बेंस मेरे साथी हैं, ग्रुप में मेरे। बेंस जी को इन्होंने लिखा, पराशर जी ने, बेंस जी, आई आल्सो एंडोर्स योर व्यू पॉइंट. नाउ द ओनली मेजर इशू रिमेन्स अपडेशन ऑफ पेंशन, विच कैन ओनली बी सेटल्ड आइदर through judiciary or on the goodwill gesture of the criminal central government, Modi government. A little bit success can also be achieved through unity of all different pensioners groups of the entire nation, but the $1,000,000 question is whether in present circumstances it is possible. अच्छा, इन्होंने लिखा कि एक ही इशू रह गया, मेजर इशू, गलत कह रहे हैं। एक सिस्टम अलाउंस का भी बहुत बड़ा मेजर इशू है और हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत बड़ा मेजर इशू है, और भी हैं इशू, लेकिन ये 3 तो मेजर इशू हैं ही, और ये भी एक बहुत मेजर इशू है। ये कॉम्पिटिशन पीरियड घटाने का, 15 से 12 करने का, और ग्रेजुएटी के 2 इशू भी मेजर हैं, लेकिन ये सीनियर लोग इसे मानते नहीं। चलो खैर, अब ये आगे कहते हैं,
Primarily, I fully agree with Mr. Baines so far as the role of IBA is its constitution, functions, and moral responsibility, including legal accountability points, are concerned. No one at the time of including IBA into our system pointed out that a non-registered body under the Society Act could be funded by banks at that time, and even now it is so. Non-CAG further aggravated the situation to fall prey to them allurements by way of foreign trips to leaders in the past is a testimony to that. Brutus of Shakespeare could be found within to encourage the evil design through a few prominents acted with responsibilities due to lax in system. IBA spreaded its wings to cripple banking system, and consequential results are before us. On DA neutralization there are different views, but no one is stressing perhaps they are not affected. ये डी प्रासर जी ने लिखा है इनको, बेंस जी को। तो ये कमेंट थे इनके, एक दो कमेंट और भी हैं शायद, देखता हूँ अभी। सिमिलर अपडेशन आफ्टर just please wait. ये तो वही है। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा है, yes. My dear CHV, whatever you have narrated is 100% correct. I am happy that you are not tired of writing the wrongdoings by the authorities in power, but I totally differ with you that DFS is coming in our way for non-implementation of pension updation on one simple question. Is FM, who herself advocated in the favor of the bank retirees more than 2 years back, ignorant? Some of ministers have also recommended in our favor. Then why delay? Why on public money a battery of lawyers on behalf of the government opposing us in the favorable Supreme Court? आगे लिखते हैं, similar the case in updation after 2002. People are fitted in revised scales and they are getting updated pension, but for pre-2002 IBA is offering revision with immediate effect instead from retrospective date, and or as per assured RBI pattern, RBI is paid updation from November 2019. Some union leaders who themselves are retired and represent workmen are still interfering in the cases of officers, retirees, and when confronted they simply wash their hands on the pretext that the retirees were not their members, but they will indulge at their convenience, and we don't have force in submission to object. We do not fight for cause collectively. Cases in different courts is a testimony to that end. It is not good. Government may not be at fault. Fault lies with IBA, UFBU and AIBA nexus, who are not placing correct position. Anomalies in pension updation special allowance are deliberately created to thrust their whims. Retirees have their ample pension fund whose interest alone can withstand the burden. हालांकि गलत करें, ये खाली से इंटरेस्ट से नहीं संभव है,
उसमें जो है शॉर्टफॉल भी जमा करना पड़ता है बैंकों को, जो एज पर रूल भी है, रूल के अकॉर्डिंग उसमें लिखा हुआ है पेंशन रेगुलेशन में। आई पर्सनली फील दैट एक्सक्रेसिया is a merely an ALM thrown to in our cups, and we are not the beggars it may delay to justify the just. We have lost so many senior colleagues in poverty. Their spouses have starved what for, and we are thinking to first get whatever is given. Please note that will encourage evil design to cripple you further without prejudice and malice towards none whatsoever. ये भी शायद इन्होंने डी प्रासर नहीं लिखा, वो पहला इनका था। तो ये था। धन्यवाद साथियों। नमन आर के त्यागी गाजियाबाद सभी साथियों को क्रांतिकारी अभिवादन। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय भारत।